Good morning, good morning and assalamu alaikum. Today is 23rd December 2022 and today is Friday. Today we will do the chapter number 1, that is science skills. Can anybody tell me what we have done in the last lesson? Okay, good. We have done about the branches of the science. We have done about different branches of science. Can anybody tell me what are the different main branches of science? Okay, good. Number 1 is biology. Number 2 is chemistry. And number 3rd is physics. Okay. Can anybody tell me what does biology means? Good. Biology means the study of life, the study of living organism. Good, you are right. And we can study about all the chemical reactions that are taking place in the living organism. All the living organisms, or whether they are plants or the animals, उनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सब कुछ अगर हम स्टडी करेंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी. ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डज केमिस्ट्री मीन्स? गुड. द वर्ड केमिस्ट्री इज एक्चुअली we are talking about the study of the matter, that everything around our surrounding is matter. So we are studying about what different factors that we are discussing about the matter. Can anybody tell me? Okay, good. Structure. Okay. Properties, the chemical reactions. Good, you all are right. Then in the chemistry we are discussing about the matter की क्या properties होती है, उसका structure कैसा होता है, वो उसकी composition कैसी है, वो किस चीज़ से मिलके बना है और उसमें कौन कौन से chemical reactions हो रहे हैं, वो सारा क्या है, that all we are talking about the in the branch of the science which is called as the chemistry. The last branch of the science was left, that was the physics. In the physics what we have done? Okay, good. The physics is actually it is also the study of the matter, but it is also related with the energy. We will discuss about the matter as well as the energy. What are the different energy which are correlated with the matter, and what are the different energies which are produced while operating the different machineries. And sometimes can anybody have an idea and can give any example of the different machines that we are using in our daily routine? Yes, good. We are using washing machine, we are using the electric appliances. Sometimes the electrical energy is converted into mechanical energy, sometimes it is converted into the heat energy, light energy, and so on. Good, you all are saying right. Today we will do the next topic, that is taking measurement. Our today topic is taking measurements.
Can anybody have idea what the word measurement means? Okay, good. Measurement means measure करना. What we have to measure? What we have to measure? Okay, किसी भी चीज़ को किसी भी अपनी कोई भी सराउंडिंग में कोई भी चीज़ हमें मिले तो हम उसको मेजर करते हैं. सही, गुड. और कोई आंसर देगा इसका? सही. जैसे हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं. सही, गुड. सो आई विल टेल यू व्हाट डज द मेजरमेंट मीन्स. Measurement means actually action of measuring things. कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें हम किसी भी चीज़ को मेजर करें, that is called as the measurement. That is actually called the measurement, not the measurements. Okay, that is actually called the measurement. अच्छा, how we can measure it? सही, हम किसी भी रूलर से कर लेंगे मेजर, या टाइम को हम क्लॉक में देख लेंगे. सही है, गुड. तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं. वी कैन यूज द वर्ड दैट वी कैन डू द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. सही. All the things which help us to measure is called as the measuring instruments. Can anybody tell me any name of the any measuring instrument? Okay, good. We can measure it ruler के through, या फिर measuring tape के through we can measure it, or we can measure the temperature with the help of the thermometer. Good. So we will discuss all the things one by one. Now we will discuss it one by one, that we can able to measure the length, the time, the temperature, the mass of the different things with the different measuring instruments. So we will discuss all the things one by one, all the terms one by one, where that we can, first of all, we can measure the length. How we can measure the length, the distance, how we can measure it? Okay, good. With the help of the ruler. Okay, we can measure it with the help of the ruler. We can measure it with the help of the ruler. We can also use the measuring tape. The ruler that we use in our daily routine, for example, the ruler, if we see, we can use in our daily routine is the measuring scale. That is this one is the steel scale, and we also use the plastic scale. If we see the scale carefully, there are the different digits in the on the scale. There are some millimeter measurements, divisions, and there are some divisions in inches, and there are some measuring tapes through which we can measure the more distance than that was mentioned in the on the scale, that are called as the measuring tape, that mostly having the person that are making the buildings, वो जो स्टील की लंबी सी उनके पास टेप होती है, और एक टेलर्स के पास भी होती है जिसको हम इंचेस टेप बोलते हैं. उसकी मदद से टेलर्स कैन मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ. That is also the measuring instrument to measure the length.
So there are also different units of the length through which we can identify that we are discussing about the length. There are the different units of the length, which are the kilometer, meter, centimeter, and millimeter. So the length can be the distance that we can measure it. That may be the less or that may be more very long distance. We can measure it with the help of the different measuring tapes. The second one is, after the length we will discuss about the volume. What does the volume means? We have discussed it before. Okay, good. The volume is actually the space which is occupied by the object. The volume is actually the space which is occupied by the object. अब volume जो है हम किसी regular object का भी measure कर सकते हैं और किसी irregular object का भी measure कर सकते हैं. If we are discussing about the volume of the regular object, then we can find out the volume of for example cube या cuboid. उसका अगर हमने volume find out करना है, so if we have to find out the volume of the regular object, we can find out it by measuring its length, breadth, or the width. This one is its width और ये इसकी क्या होगी, height. जब हम उसकी length, width और height को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उसका आराम से क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं. सही. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट. We can find out or we can measure it with the help of the instrument which is called as the measuring cylinder. And the measuring cylinder is like this. This one is called as the measuring cylinder, and we can find out the volume of the irregular objects. For example, we can find out the volume of the different liquids by pouring it in the measuring cylinder. This is made up of the glass, and we can find out the volume of the different irregular objects. The units of the volume, if we talk about the units of volume, there are the different units of the volume. Number one is liter, centiliter, milliliter. These are the different liters जिसकी मदद से हम लोग किसी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट का जो है वो वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे हम घर में कहते हैं ना कि इतने जो है वो एक लीटर दूध ले आओ, या फिर अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके बॉटल के ऊपर लिखा हुआ होता है 2.5 लीटर या 2 लीटर या 1 लीटर की ये बॉटल है. तो दैट हैविंग द लिक्विड इन इट अबाउट द that showing that it having the particular amount volume of that liquid.
Okay, we have done the two of them. Now we will discuss about the next one, that is mass. What does the mass means? The third one is the mass. Can anybody tell me mass? हाँ जी, गुड. जो हमारा वजन होता है वो mass होता है. और कोई बताएगा? Amount of something. Good. The amount of any matter in something, किसी भी चीज़ का जितना भी अमाउंट होगा ना, किसी भी मैटर का, कोई भी हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है उसका जितना भी अमाउंट होगा, दैट इज एक्चुअली द मैटर, that is actually the mass. We are discussing about the mass of that of anything. And if we discuss about the different units of the mass, या इससे पहले हम लोग कर लेते हैं दैट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के किसके ज़रिए हम लोग जो है वो मैथ को वे कर सकते हैं या किसी भी चीज़ का वज़न कर सकते हैं. तो आप लोग डेली बेसिस पे बाहर जाते हो ना, हम लोग बहुत सी चीज़ें अपनी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, तो उस ग्रॉसरी में हम लोग क्या चीज़ खरीदते हैं? हम सब्ज़ी भी खरीदते हैं, हम डिफरेंट शॉप्स में जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. तो वो किस तरह हम कहते हैं? ओके, गुड गुड, के हमें इतने किलो दे दो, इतने किलो. तो वो जो शॉपकीपर होता है वो किस में वे करता है? गुड, बैलेंस. उसके पास बैलेंस मशीन होती है जिसको हम कहते हैं वेइंग स्केल. एक वेइंग स्केल होता है जो जिसको हम उर्दू में तराजू बोलते हैं. सब्जी वाली दुकान के सब्जी वाले के पास तो तराजू ही होता है जिससे वो वे करता है, वरना दूसरी दुकानों में एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है और कुछ जगह पे वेइंग स्केल्स भी होते हैं. The balance is sometimes the balance is physical balance, or we can also say it as the electronic balance. You can also see it. This one is the electronic balance that mostly the shopkeepers have with them. If we on the from here, तो यहाँ पे इसकी जो है वो रीडिंग आ रही है, तो हम इसको जो है वो ज़ीरो मोड करके दिस इज़ द वेइंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट जो भी चीज़ हमने वे करनी होती है वो हम यहाँ पे रखते हैं इसके प्लेट पे, और यहाँ से इसका जो है वो इट इज़ शोइंग द डिफरेंट मेजरमेंट इन टर्म ऑफ ग्राम्स और किलोग्राम्स. तो हम आसानी से जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं. सही है. दिस इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ओके. Now the mass can be measured. The units, different units of the mass are kilogram, gram और milligram. After the mass, we can also measure the temperature. Can anybody tell me what is the temperature? जो हमें बुखार हो जाता है, सही है, हरारत जिसको हम कहते हैं. तो so we can explain the temperature as the temperature means the how hot or the cold something is, कि कोई भी चीज़ कितनी
गर्म है और कितनी ठंडी है। हम किस चीज़ से टेम्परेचर मेजर करते हैं? हाँ जी, दैट इज राइट, दैट वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो आप लोगों ने देखा होगा ना घर में किस तरह से होता है, कैसा होता है थर्मोमीटर? दैट इज लाइक दिस वन इज द थर्मोमीटर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, दैट हैविंग अ मरकरी इन द सेंटर ऑफ द थर्मोमीटर। उसके थर्मोमीटर के सेंटर में जो है वो मरकरी होता है, जिसकी मदद से दैट कैन राइज और अप एंड डाउन मूव करता है, और जो ये शो करता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या आपको कितना बुखार है, कितना तेज़ बुखार है। सही है, तो वी कैन मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। और अगर हम लोग इसके टेम्परेचर के यूनिट्स की बात करें तो देयर आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज सेंटीग्रेड, that can also be called as the degree centigrade, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। सही है, एंड द सेकंड वन इज द फ़ारेनहाइट, that is represented as डिग्री F या फिर डिग्री C। सेंटीग्रेड को हम सेल्सियस भी बोलते हैं, और फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग डिग्री F का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सेंटीग्रेड के लिए हम लोग यूज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। सही, सो द लास्ट वन वी कैन आल्सो मेजर द टाइम। टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, एंड द टाइम कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? हम घड़ी इस्तेमाल करते हैं, हम वॉच इस्तेमाल करते हैं, हम रिस्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं, गुड, हम लोग क्लॉक से देख सकते हैं। सही है, दीज ऑल आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टाइम। हमारे पास स्टॉप वॉच भी हो सकती है, हम स्टॉप वॉच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्लॉक से भी देख सकते हैं, हम रिस्ट वॉच से भी देख सकते हैं। स्टॉप वॉच वही होता है दैट योर पीई टीचर आर हैविंग विद देम, एंड दे कैन रिकॉर्ड द सेकंड एंड द मिनट्स ऑफ डिफरेंट। कोई भी अगर आपके दरमियान कोई रेसेस हो या गेम्स हो तो वो स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर योर टाइम एंड सेकंड। सही है, तो हम इस क्लॉक के थ्रू हम लोग क्या मेजर करते हैं? हम टाइम मेजर करते हैं कि डिफरेंट के कितने मिनट्स हो गए, कितने सेकंड हो गए। तो वी कैन आल्सो से दैट द यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द टाइम, जिससे हम लोग हमें पता चल जाएगा कि हम टाइम की बात करें, दैट आर द आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। आवर, मिनट और सेकेंड की बात करते हैं हम। सही है, कितने घंटे हो गए, कितने मिनट्स हो गए या कितने सेकंड हो गए। सही, हमने जो है वो डिफरेंट टर्म्स पढ़ी कि हम डिफरेंट टर्म्स को डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, या हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो I think you can understand it well. So in the last I am giving you some questions that you will do in your weekend, and you can take help from the video, and you can take the help from the book also. I am writing some questions on the board. I have written 2 questions on the board. Number 1 is, which units are used to measure mass, length, volume and temperature? इनके लिए हम कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे in order to
measure the volume, length, mass. We have discussed it. I have discussed in this video. You have to listen the video carefully again and again so that you can answer these two questions. The second question is, which measuring instrument would you use to measure the mass of a bag of a flour? आटे का अगर एक थैला है उसका मास अगर हमने मेजर करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन. एंड द थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ अ टी. उसका अगर एक चाय के कप का अगर हमने टेम्परेचर नोट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द lecture and the video, and you can get the answer of all of these two questions from, you can take help from the video, and you can also take help from the book also. Okay, thank you so much.